Hey guys, I hope you will be fine. Again, I'm here with a new video. In this video, I'm gonna teach you 10 sentences which we use in daily life. Before starting video, I request to my loyal viewers that if you are new on my channel, then please subscribe my channel and click the bell icon and select option all so that you can get notification of every coming video. So without wasting time, let's get start our lesson. So first sentence is, it happened to me unknowingly. It happened to me unknowingly. ये अनजाने में मुझसे हो गया. Second, for next time I'll pay attention. For next time I'll pay attention. अगली दफ़ा मैं ध्यान रखूँगा. 3, how nice it would be if a hobby could become a profession. How nice it would be if a hobby could become a profession. कितना अच्छा होगा अगर शौक़ ही पेशा बन जाए. इस जुमले का ये मतलब है कि किसी को कोई शौक़ है, किसी भी चीज़ का शौक़ है. जैसे मुझे इंग्लिश बोलने का शौक़ है और मैं किसी कॉल सेंटर में लग जाऊं, वहाँ पर सिर्फ इंग्लिश बोलना ही मेरा काम हो और मुझे उससे पैसे भी मिलें और मेरा शौक़ भी पूरा आ जाए. तो इस जुमले का ये मतलब है. For what more could a person want? What more could a person want? फिर बंदा इससे बढ़कर क्या चाहेगा. 5, I'll be lucky if that happens. I'll be lucky if that happens. मेरी तो किस्मत ही खुल जाएगी अगर ऐसा हो तो, या मैं खुशकिस्मत हूँगा ऐसा हो तो. 6, then I'll work hard. Then I'll work hard. ये I'll contraction यूज़ किया हुआ है, ये I will है. फिर मैं खूब डट कर मेहनत करूँगा. 7, don't know what is written in my destiny. Don't know what is written in my destiny. क्या पता मेरे नसीब में क्या लिखा है. 8, but whatever happens will be good. But whatever happens will be good. लेकिन जो भी होगा सब अच्छा ही होगा. 9, living without parents is very difficult. Living without parents is very difficult. माँ बाप के बगैर रहना बहुत मुश्किल होता है. The last one is 10, very few people succeed living away from their parents. Very few people succeed living away from their parents. बहुत कम लोग ही माँ बाप से दूर रहकर कामयाब हो पाते हैं. So guys, these were my 10 sentences. I hope you will like it. For speaking English, join my WhatsApp group given in the description. English बोलने के लिए description में दिया गया मेरा WhatsApp group join करें. See you in next video. Have a good day. Take care. Bye bye.